अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं हूँ शगुफ्तारी वोकेशनल विंग सदर में आप सब लोगों को वेलकम करते हैं। सो गाइस, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग टॉपिक को गो थ्रू करने जा रहे हैं यूजिंग HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो स्टे कनेक्ट विद मी, वीडियो को एंड तक देखिएगा, इट्स वेरी इन्फॉर्मेटिव फॉर यू। और लाइक करना, ऑब्वियसली शेयर करना, गुड कमेंट पास करना मत भूलिएगा, कॉज वी नीड ऑल योर सपोर्ट एंड लव। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले गाइज हमने 3 फाइल्स क्रिएट करनी है। फर्स्ट वन इज़ जावास्क्रिप्ट एंड सेकंड वन इज़ HTML एंड थर्ड वन इज़ CSS। यू नो वेरी वेल, जो शुरू से देखते आए हैं दे हैव एन आइडिया अबाउट हाउ टू क्रिएट, अदरवाइज आई विल शो यू विद द स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पर हम इंडेक्स की फ़ाइल क्रिएट कर लेंगे। सो आई जस्ट क्रिएट हियर द इंडेक्स फाइल। Okay. Index dot HTML, इसी के साथ साथ we are going to create here index dot CSS, now after that we are going to create here index dot JS. So here is our 3 files, और वन बाय वन इन सब को हम इन सब के ऊपर वर्किंग करेंगे और हम देखेंगे किस तरीके से हमारा काम स्टार्ट होगा। सबसे पहले यहाँ पर आ जाते हैं एंड एक्सक्लेमेटरी साइन से हम इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट है वो जनरेट कर लेंगे, जिसको हम इमेज टेक्स्ट कहते हैं। इसी के साथ व्हाट वी आर गोइंग टू क्रिएट, हम क्या बनाने चाह रहे हैं, वी आर गोइंग टू क्रिएट द मैसेज बॉक्स अपडेट, बहुत इंटरेस्टिंग सा फॉर द मदर डे स्पेशल। सो यहाँ पर हम लिख देते हैं हैप्पी मदर डे। अच्छा, इसको आप फादर डे में भी कन्वर्ट कर सकते हैं इस एप्लीकेशन को। सो डिपेंड ऑन यू इफ़ यू वांट टू क्रिएट। सो ओके, so move, if you want to record the source code, I also provide the link in the description, so don't be worry about that. So यहाँ पर सबसे पहले क्लास बनाएंगे हम गाइस कार्ड्स की, और इस कार्ड के अंदर हम सबसे पहले h1 जनरेट कर लेंगे। सो h1 के अंदर जो भी मैसेज आपने प्रिंट करना है, या इफ़ यू वांट टू राइट हियर हैप्पी फादर्स डे या मदर्स डे, डिपेंड ऑन यू, आप यहाँ पर दोनों के लिए बना सकते हैं, या कोई और अफेक्टिव क्राइटेरिया तो वो भी आप ले सकते हैं। हैप्पी मदर्स, कोई और जेंडर पे बनाना चाहें, डॉटर, ब्रदर, एक्स वाई ज़ेड, यू कैन ईजिली एडिट एंड अपडेट ऑल दिस थिंग्स। ठीक है जी। तो यहाँ पर गाइस हमने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी पड़ेगी हमें, जो कि इमोजी से। सिंपल आप एक्सटेंशंस पर आए, यहाँ पर सर्च कर लें इमोजी, तो यहाँ से आप ये वाले एक्सटेंशन को अपने पास डाउनलोड कर लीजिएगा, या ये वाली, दोनों में से कोई सी भी कर सकते हैं। मुझे यहाँ पर कुछ इमोजीज़ गेट करने हैं, तो सिंपल मैं क्या करूँगी, यहाँ पर अपना कर्सर रखूँगी, प्रेस हियर द F1 की फ्रॉम योर कीबोर्ड। जैसे F1 करते हैं, यहाँ पर इंसर्ट इमोजी आ जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर मुझे फॉर एग्जांपल बुके चाहिए, तो आई जस्ट राइट इट हेयर। ओके, तो यहाँ देखें मेरे पास एक बुके आ गया। तो इस तरीके आसानी से आप कोई भी इमोजीज़ ऐड करना चाहते हैं तो ईजिली आप कर सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू टेक इट हेयर द पैराग्राफ, और मैं यहाँ पर पैराग्राफ के अंदर एक आईडी जनरेट कर लेती हूँ, क्योंकि हमें जावास्क्रिप्ट में लेके जाना होगा सब चीज़ों को, तो बहुत ध्यान से काम करना है। जावास्क्रिप्ट अगर प्रॉपर वे में नेम कॉलिंग नहीं करेगा तो यू नो वेरी वेल कि फिर प्रॉब्लम आपके प्रोग्राम के अंदर आती है, और फिर प्रोग्राम प्रॉपर वे के अंदर वर्किंग नहीं करता। यू आर द बेस्ट, so I just write it here some message, best mom in the world। ठीक है जी, now close it here the paragraph। इसी के साथ take your input, type, we are going to take it here the tags। इसी के साथ we are going to take another ID, and ID हम यहाँ पर custom message रख देते हैं। so snake method यूज़ करना होगा, सॉरी camel method,
फॉर योर फंक्शंस। सो यहाँ पर हमने कस्टम मैसेज राइट डाउन कर दिया। इसी के साथ साथ वी आर गोइंग टू टेक इट हियर द प्लेस होल्डर टैग्स। सो प्लेस होल्डर में हम बता देंगे कि यहाँ पर हमें क्या रिक्वायर्ड है। वी आर गोइंग टू राइट इट हियर, राइट योर कस्टम मैसेज। सो वट एवर जो भी मैसेज आपने डिलीवर करना होता है यू शुड नीड टू राइट इट हियर। सो राइट योर custom message। ठीक है जी, नाउ आई एम जस्ट क्लोज दिस टैग हेयर। इसी के साथ साथ हमारा टैग क्लोज हो जाएगा। ओके, सो इनपुट के टैग के बाद वी आर गोइंग टू टेक एन अदर बटन। सो फर्स्ट बटन हम टैग कर लेते हैं। ओके, तो बटन पे इवेंट लिखना है आपने ऑन क्लिक। So write it here, the update message, clear here, call here the functions। यहाँ पर हम अपडेट मैसेज राइट डाउन कर देंगे। ठीक है जी, सो फर्स्ट बटन इज क्लियर। नाउ मूव ऑन द सेकंड बटन। on click, so here is show surprise again, function is close। यहाँ पर if you want to take here surprise, तो again मैंने बता दिया था F1 प्रेस कर लेंगे, insert emoji, एंड देन जो भी आइकन फाइंड आउट करना है हम यहाँ पर उसको लिख देंगे। सरप्राइज़ नहीं है तो हम यहाँ पर कोई गिफ्ट का लिख देते हैं। सो नाउ यू कैन सी आई जस्ट एडेड हेयर। सो यहाँ पर मैं इस तरीके से इमोजीज ऐड करना बहुत इजी है गाइस। बस आप सिंपल VS कोड में एक्सटेंशन ऐड कर दें। और किस तरीके से करते हैं मैंने बहुत दफ़ा अपने प्रीवियस लेक्चर में डिक्लेयर किया है। मेरे अगर आप VS कोड एक्सटेंशंस की प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो वहाँ पर ईच एंड एवरीथिंग अवेलेबल है। तो यहाँ पर मैं एक सरप्राइज की क्लास बना लेती हूँ। ओके, और यहाँ पर आई ऑल्सो क्लियर हेयर द ID इज़ ID is also a surprise। ओके, सो इसी के साथ वी आर गोइंग टू क्रिएट हेयर। इस डिव से हम बाहर आ जाएंगे एंड देन यहाँ पर जस्ट हम सिंपल जो हमारा स्क्रिप्ट फाइल है जिसको हम index.gss कहेंगे, GS कहेंगे, उसको हम सिंपल यहाँ पर कॉल कर देंगे। स्क्रिप्ट के अंदर सोर्स के साथ आप अपनी फ़ाइल को सेलेक्ट करके कॉल कर लें, जो कि हमारी ये थी। ठीक है जी, और ऊपर हमने ऑब्वियसली लिंक बनाना है CSS का। सो ये बात सबको पता होगी कि टाइटल के बाद हम हेड के सेक्शन में लिंक क्रिएट करते हैं जो कि हमारा CSS को इंटरलिंक करता है। अगेन डॉट सेलेक्ट index.css relation.stylesheet। ठीक है जी, सो नाउ यू कैन क्लोज इट हियर। तो हमारा CSS HTML है वो कंप्लीट हो गया है गाइस। अब हम सिंपल इसके CSS की साइड पे करते जाते हैं और इसका एक कंप्लीट इंटरफेस यहाँ पर डिज़ाइन करेंगे और फिर देखेंगे कि CSS किस तरीके से काम कर रहा है। सबसे पहले बॉडी पर आ जाते हैं एंड देन क्रिएट हियर द मार्जिन फर्स्ट जो कि है 0। इसी के साथ साथ वी आर गोइंग टू टेक इट हियर द पैडिंग एज वेल एज 0। मूव ऑन दी बैकग्राउंड, डिपेंड करता है इफ़ यू वांट टू चेंज द बैकग्राउंड तो कलर कॉम्बिनेशन आप कोई से भी ग्रेडियंट इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हम यहाँ पर अपने हिसाब से कलर प्रोवाइड कर रहे हैं। फॉन्ट फैमिली हम सैंस सेरिफ ऐड कर देते हैं। इसी के साथ साथ गाइस डिस्प्ले
obviously flex रहेगा. After that, justify content centered, and then again align item centered and height. हम ये settings obviously मैं logical way में normally यही put करती हूँ. So जो users हैं they have an idea about all this my changes and requirements. So I just take it here the card. सबसे पहले बैकग्राउंड रखेंगे कार्ड का वाइट. इसके अलावा जिस तरह से मैंने कहा कि बैकग्राउंड पैडिंग वगैरह तो ये अपने हिसाब से आप इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करना चाहें तो कर सकते हैं. 30px पैडिंग. बॉर्डर रेडियस हम रख देते हैं 15%. मैं इसका प्रीव्यू भी आपको दिखाती रहती हूँ साथ साथ ताकि यू कैन गेट द आइडिया. सो गाइस यहाँ तक इसका लाइव प्रीव्यू कंप्लीट हुआ है. हम इसको फर्दर मोर आगे लेके चलते हैं और अपने हिसाब से आप जो भी एडिटिंग करना चाहेंगे वो टाइम करते रहेंगे. सो इम्प्लीमेंट हियर द बॉक्स शैडो. सो बॉक्स शैडो इम्प्लीमेंट करते हैं 10px 0 25px. आफ्टर दैट RGBA कलर. ऑल वैल्यूज़ आर टैब के ज़रिए चेंज करते हैं 0.1. ठीक है जी. मूव ऑन द नेक्स्ट. इसी के साथ टैग्स अलाइन सेंटर्ड and after that implement here with 90% and maximum width is 400px रख देते हैं. ठीक है जी. So move on the H1. So H1 में सबसे पहले guys we are going to implement here the color of font. If you want to change तो आप आसानी से कोई भी कलर दे सकते हैं. Okay. Must look like nice. इसी के साथ पैराग्राफ पर आ जाते हैं and then implement here the font size. मैं यहाँ पर 18px रख देती हूँ. इसी के साथ साथ मार्जिन 15px then 0. After that implement here the input. So here is the padding 10px. Width is 80%. Okay. Implement here the border 1px. Solid. Here is the color. Okay. So after that implement here the border radius. Here is 10px. And the margin bottom is also a 10px. So move on the next. Here is a button. अब हम buttons पर आ जाते हैं. So सबसे पहले मैं background color select कर लेती हूँ buttons का. जिस तरह से मैंने बताया था एप्लीकेशन का कलर आप ग्रेडियंट भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. अगर आप देना चाहें सिंपल कलर भी रख सकते हैं. डिपेंड ऑन यू कि किस तरीके से आप कलर कॉम्बिनेशन को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. फॉन्ट कलर इज़ वाइट और अगर फादर है तो ये ब्लू हो जाएगा सब. और मदर्स डे पे फिर आप इसको यही रखिएगा पिंक में. सो पैडिंग पैडिंग में गाइज मैं 10px then 15px रख देती हूँ. After that implement here the margin is 5px among them. इसी के साथ साथ we are going to implement here the border radius is 15px. Okay.
So after that we are going to implement cursor become pointer when you take the hover, and then transition is 0.3 seconds. Okay, move on the next. After that we are going to implement here the button hovers. So we are going to implement here button hover like this one. इसी के साथ साथ यहाँ पर बैकग्राउंड कलर इम्प्लीमेंट कर देंगे. जैसे ही आप अपना कर्सर लेके जाएंगे बैकग्राउंड अपने आप को ट्रांसलेट करेगा. सो हियर इज द कलर कोड. ओके फाइन. थोड़ा सा डार्क ले लेते हैं. ओके, इट्स लुकिंग नाइस. मूव ऑन द सरप्राइज. Why the surprise class is not showing? Let me check. ओके, हमने क्लास सबके यहाँ पर बनाई है सरप्राइज की, आईडी भी बनाई है एंड देन दिस. ओके, इसी के साथ साथ इम्प्लीमेंट हियर द मार्जिन. Top is 20 px. Okay, it's working. So font size is 18 px. After that implement here the color. So animation, fade in, fade in 1 second is and out. Okay, after that we are going to implement here the some keyframes here. बहुत इंटरेस्टिंग सा है. और if you require the source code, don't be worried about that. We also provide you source code link in description. So fade in from okay, here is the opacity is 0. So the transform is translate on y-axis. Sorry, translate on y-axis is 10 px. Okay, so now back to 2. Again here is the opacity is visibility 1. Transform. So here is the translate on y. Implement here the 0. तो अपोजिट हो जाएगा, दोनों एक दूसरे के. ठीक है जी. इसी के साथ साथ अब हम आते हैं इसके जावास्क्रिप्ट फाइल पे. सिंपल अपडेट का फंक्शन है और ज़्यादा कोई बड़ा फंक्शन रिक्वायर्ड नहीं. यहाँ पर आप इसका इंटरफेस देख सकते हैं. हमने यहाँ पर फ्लावर दिया था, तो अपने हिसाब से जिस तरह आप इसको स्ट्रेच करते रहेंगे इस लुक लाइक दैट. ठीक है जी. सो ये क्योंकि आपकी फ्लैक्सिबल है, रिस्पॉन्सिव है, दैट्स वाई अपने आप को एडजस्ट कर रहा है. ठीक है गाइस. सो अब इसको हम बंद कर देते हैं इसके प्रीव्यू को, क्योंकि अब इस प्रीव्यू का काम नहीं है. हम आते हैं अपने जावास्क्रिप्ट पर. जो क्लासेस हमने कॉल करी थी गाइस अपने माइंड में रखनी है और वैसे ही कॉल करनी है. फंक्शन पर आकर सबसे पहले अपडेट मैसेज. सो अपडेट मैसेज की क्लास यहाँ पर कॉल कर लेंगे. हियर इज द फंक्शन. ओके, सबसे पहले गाइस कंस्ट्रक्ट करते हैं. सो कस्टम टैग्स. First to document dot get element by id. So put it here the name. हम यहाँ पर सबसे पहले कस्टम मैसेज का नेम देंगे.
So here is a custom message dot value. इसी के साथ बाहर आ जाएंगे अगेन, कंस्ट्रक्ट message equals to document dot get element by id. So यहाँ पर again you can call here the message. Okay, fine, now close it here. ठीक है जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम if की कंडीशन इम्प्लीमेंट करेंगे। So again implement here if custom tags dot trim so not equal so run here this statement. Message dot text content equals to जो custom text provide किया जाएगा उसके हवाले से they are gonna be adjusted. Move on the else, provide here two conditions. Message dot text content equals to so here is the you are the best mom in the world. You put it here the exclamatory sign and now close this statement. ठीक है जी, so back after you can go out from this main function, you can create it here another function for the show surprise. So here is show surprise. Okay, fine, now move on the make here some constructions. So construct surprise equals to document dot get id element by id, and then you can put it here surprise. Now close this statement. After that implement here another construct quotes. अब जो कोटेशंस चलनी चाहिए वन बाय वन आप उसको पैरामीटर्स में रन करा देंगे। जो मैसेजेस यहाँ पर लिखे आने चाहिए so write it here the random message a mother's love is endless. So again I just take it here some icon, so F1 press कर लेते हैं guys. Now back on emojis and heart emojis required है मुझे यहाँ पर, so I just search here the heart, it's not a heart. So again I'm search here, okay, so scrolling करते हैं and then here is the heart. ठीक है जी,
So again you can put it here comma, write it another message here. So they are the randomized message. Thanks for always, ये तब लिखे जाते हैं अगर if you don't have any idea how to write and how to give here any message, तो फिर you can run it customizable. ठीक है जी. So okay, I just again here is insert emoji and then I'm gonna search it here the flower. Okay, so again put it here another comma. Now you are going to write it here another. तो यहाँ पर इतनी लंबी लिस्ट रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं. हम यहाँ पर सिर्फ 3 मैसेजेस दे रहे हैं. एंड इफ़ यू वांट टू राइट मोर देन दैट तो आप यहाँ पर और मैसेजेस राइट डाउन कर सकते हैं. तो डिपेंड करता है आपके ऊपर. सो आप यहाँ पर 20-30 मैसेजेस भी राइट डाउन कर सकते हैं ताकि वो रैंडमाइजली वो चेंज होते रहें. ठीक है जी. सो नाउ हियर इज़ द एंड ऑफ आवर मैसेजेस. वी आर running a parameters. Okay, move on the next. So construct random equals to math dot flow math dot random. Now close this function. Multiply by quotations जो आपने राइट डाउन करी है डॉट लेंथ. इतनी बड़ी भी लेंथ होगी उसके हिसाब से उसको रैंडमाइजली चेंज करता रहेगा. ठीक है जी. सो नाउ हियर इज अनदर सरप्राइज डॉट टेक्स्ट कंटेंट इक्वल्स टू quotations या quote random एंड देन यहाँ पर आपका मैसेज क्लोज हो गया. सो गाइज इसको रन कराते हैं एंड देन वी आर गोइंग टू शेयर द फाइनल रिजल्ट विद यू. सो हियर इज़ द फाइनल रिजल्ट. हम आपके साथ शेयर करते हैं गाइज. सो ये इंटरफेस था आपके सामने और यहाँ पर अपडेट मैसेजेस में जो मैसेज आप यहाँ पर राइट डाउन करेंगे सरप्राइज पे क्लिक करते हैं. हमने 3 से 4 मैसेजेस प्रोवाइड किए थे. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके मैसेजेस यहाँ पर रन हो रहे हैं और ये रेफरेंसेस मैसेजेस. इफ़ यू वांट टू राइट इट हियर फर्दर मोर ठीक है. नाउ अपडेट है हेयर. नाउ यू कैन सी यहाँ पर ये मैसेज आप देख सकते हैं अपडेट हो रहा है. तो टाइम जब भी अपडेट करते रहेंगे. अदरवाइज सरप्राइज मैसेजेस में बाय डिफ़ॉल्ट मैसेजेस भी अवेलेबल हैं. सो हेयर इज़ अ वेरी ईजीएस्ट मैथड गाइज. आसानी के साथ आप ये मैथड क्रिएट कीजिए और अपने लव वंस के साथ शेयर कीजिए. इस तरीके से इफ़ यू वांट टू चेंज इम्प्लीमेंट द कलर कॉम्बिनेशन या बॉयज़ के हवाले से है या गर्ल्स के हवाले से है तो अपने हिसाब से कलर कॉम्बिनेशंस भी आप बहुत अच्छे और बहुत इफेक्टिव डाल सकते हैं. इसी के साथ साथ इफ़ यू वांट टू इम्प्लीमेंट सम आइकन्स इमोजीज प्रोवाइड करने हैं. इमोजीज की जगह इफ़ यू वांट टू इम्प्लीमेंट हियर सम आइकन. इफ़ यू वांट टू चेंज द बैकग्राउंड कलर. तो इसी सेम तरीके से जिस तरीके से हमने ये ऐप क्रिएट किया इसी तरीके से आप अपनी एप्लीकेशन बना सकते हैं. और इफ़ यू वांट टू प्रोवाइड हियर द बैकएंड तो ये सारे मैसेजेस आपके बैकएंड के अंदर भी सिक्योर हो जाते हैं. सो डिपेंड करता है कि गाइस आप किस तरीके से इस एप्लीकेशन को रन कराते हैं और इट्स अ वेरी ईजीएस्ट मैथड. सो स्टे कनेक्ट विद मी. लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, गुड कमेंट पास करते रहें ताकि हम इस तरीके की बहुत इफेक्टिव और इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन आप लोगों के लिए क्रिएट करते रहें. सो मिलते हैं अनदर वेरी इन्फॉर्मेटिव एंड एक्साइटिंग ट्यूटोरियल के साथ. जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए. और वन मोर थिंग, अभी आने वाले फ्यू डेज़ के अंदर हम लोग बहुत एक्साइटिंग एंड अमेजिंग ट्यूटोरियल आपके साथ शेयर करेंगे. सो मेरी कोशिश होगी वो सारे ट्यूटोरियल्स हम यूनिकली डिज़ाइन करें आप लोगों की ताकि इससे पहले किसी और लेक्चर में आप लोगों को ना मिले. सो आज का लेक्चर भी आई होप किसी और लेक्चर के को इंटरलिंक नहीं करेगा आप लोगों को. बहुत इफेक्टिव और इंटरेस्टिंग सा लेक्चर हमने आज क्रिएट किया है. So if you require the source code, I also provide you in the description, so don't be worried about that.
सो लाइक करना, शेयर करना, गुड कमेंट पास करना मत भूलिएगा। अपनी दुआओं में बहुत सारा याद रखिएगा। मिलते हैं अनदर इन्फॉर्मेटिव एक्साइटिंग ट्यूटोरियल के साथ। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें गाइस। अल्लाह हाफ़िज़।